फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड साइंस पार्ट 1 चैप्टर नंबर 12 स्टडी ऑफ साउंड का ये लास्ट पार्ट के वीडियो यानी कि पार्ट 3 वीडियो है। और आज हम लोग इस चैप्टर के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपने इसके पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उसे जाके ज़रूर पहले देखिएगा, क्योंकि हमने उन दोनों ही पार्ट्स में मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। सो देयरफॉर प्लीज सी दैट पार्ट फर्स्ट एंड देन सी दिस पार्ट। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमने अभी तक लास्ट लेक्चर्स में बहुत कुछ सीख लिया था। ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का कॉन्सेप्ट किया, फिर हमने सोनार का कॉन्सेप्ट किया था, फिर हमने बहुत कुछ और भी कितनी चीज़ें सीखी थी। अब हम लोग एक सिमिलर कॉन्सेप्ट करेंगे, जो आपको आपने ये कॉन्सेप्ट का नाम भी पहले सुना होगा, सोनोग्राफी। आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स या फिर आपकी खुद की आपने सोनोग्राफी ऐसे मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि सोनोग्राफी करवानी है, तो डॉक्टर के पास ये टेक्नोलॉजी होती है। सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी यूजेस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो हमने बात कर ली है व्हाट आर इंफ्रासाउंड्स, अल्ट्रासोनिक साउंड्स, ऑडिबल साउंड्स, वी हैव टॉक्ड in last part. Waves to generate images of internal organs of the human body. This is useful in finding out the cause of swelling, infection, pain, etc., the condition of the heart, the state of the heart after a heart attack, as well as the growth of fetus inside the womb of a pregnant woman are studied using this technique. So sonography की मदद से we can see inside our body using in the ultrasonic sound waves are used in this sonography, which help the doctor to see inside our body what is happening, which bone is broken, or what problem is there inside us, what swelling, infection or pain, and also our condition of the heart. When a person has got an heart attack, after that they must keep an eye on the heart condition, and also how the in baby in womb of a woman. So it is very helpful for us and it is very important and very useful also. So because of it we can see our internal organs, which can help us to do a great treatment. This technique makes use of a probe and a gel. So here you would have, अगर आपने सोनोग्राफी करवाई होगी तो आपको पता ही होगा एक जेल लगाते हैं आपके, अगर एब्डोमेन की है तो यहाँ पर आपको जेल लगा देंगे, उसके बाद प्रोब का यूज करते हैं. This gel is used to make proper contact between the skin and the probe so that the full capacity of the ultrasound can be utilized. So वो जेल इसलिए यूज किया जाता है ताकि एक प्रॉपर कांटेक्ट हो जहाँ पर भी स्किन और प्रोब के बीच में. प्रोब मतलब मैं वो उन्हें हाथ में पकड़ा तो इस जगह का देखना है अंदर क्या है. सो जैसे यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर जेल लगा है तो इसके ऊपर ऐसे मशीन जैसा होगा, ऐसे पकड़ा होगा, उस जगह का पार्ट अंदर का दिख रहा होगा. दैट इज प्रोब. The gel is applied to the skin outside the internal organ to be studied. High frequency ultrasound is transmitted inside the body with the help of the probe. The sound reflected from the internal organ is again collected by the probe and fed to a computer which generates images of the internal organ. As this method is painless, it is increasingly used in medical practice for correct diagnosis. So ये पूरा प्रोसेस जो सोनोग्राफी का होता है वो पेनलेस है. आपको सबको पता ही होगा कि उसमें बिल्कुल पेन नहीं होता, बहुत सिंपली हो जाता है. तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है. बहुत टाइम्स कुछ भी मेजर प्रॉब्लम होगा या फिर कोई चेक करना होगा कि ब्रेक हुआ है, कुछ हुआ है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये यूज़ किया जाता है. और सोनोग्राफी की टेक्निक में क्या क्या यूज़ किया जाता है वो भी आपको याद रखना है कि प्रोब और जेल का इस्तेमाल किया जाता है. और ये मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर करेक्ट डायग्नोसिस. सो इट इज ऑल्सो यूज फॉर इट एंड it is also used to study our internal organs, how they work. It can be used for that also.
So ultrasonic waves have very much usefulness for us, because we have studied any more other uses also in the last lectures. So now let's go to next topic, which is, before going, I will show you, this is a machine of sonography, the sonography machine. And you can see examination procedure there is, this part we call as probe. And here, like this type of image we can obtain, and the doctor figure out, mostly we cannot understand what is it, but the doctor can figure out what which organ which is of the image. Development in science have led to advances in technology which have helped us make much progress. However, every coin has two sides, and the misuse of science has had serious consequences of human life. The sonography technique can help to follow the growth and well-being of an unborn baby, but the increasingly incidence of female foeticide as a result of the discrimination between the girl and the boy child is an example of the grave misuse of this technique. Female foeticide is now cognizable offense under the PNDT Act. So here it is a very important thing that we should remember, and it will help us in all our life. We should remember this thing, that first what happened, that sonography also benefits us and it has some disadvantages also. So use why with the use of sonography we can find out the unborn baby, यानी कि जो बेबी वॉर्म में है उस बेबी का जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, एंड उसकी मदद से फिर अगर फीमेल है तो उसको अबॉर्ट करवा देते हैं. सो दैट इज अ क्राइम नाउ. It has been a crime, and we should never do this, because we have to save girl child. After all, girl childs are also our future. Next is the human ear. The ear, a human ear is a very small concept, but it has many different parts. The ear is an important organ of the human body. We hear sounds because of our ear. When sound waves fall on the eardrum, it vibrates. These vibrations are converted into electrical signals which travel to the brain through nerves. The ear can be divided into three parts. So how can we hear the sound? So here it is the written that ear, first of all, ear is very important organ of our body, and it's also a sensory organ, sense organ. We hear sounds because of our ear only. When sound waves fall on the eardrum, that eardrum यहाँ पर होता है, अब बोल सकते हो कान के पर्दे, it vibrates, वो वाइब्रेट करने लग जाता है, और ये वाइब्रेशंस कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जो ब्रेन तक पहुंच जाती है, नर्व्स की मदद से ब्रेन तक पहुंच जाती है. तो यही साउंड वेव्स जो कि यहाँ पर आने के बाद तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जैसे बन जाती है और वाइब्रेशंस है, और जो हमारे ब्रेन तक जाता है. सो उसकी वजह से ब्रेन को मालूम पड़ता है क्या बोल रहा है, और हम लोग उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं. द ईयर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. तो आप बोलोगे एक इतना छोटा सा ईयर को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया. हाँ, इट्स हैड सम स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट पार्ट इज आउटर ईयर, second part is middle ear, and third part is inner ear. Now we will learn each one. This is a structure of the ear mentioned. Chain of three bones. Here you can see the semicircular canals are there. Here it is the inner ear, which is inside, we cannot see. Outer ear, this is the outer ear, and there is one more inside here in the middle, between the inner ear and the outer ear is the middle ear. You can see it, and here it is the eardrum. This purple one is called the eardrum, and here it is a tympanic cavity. I have a more technical diagram. This will help you. The color orange is the outer ear, this part, it's very huge. The color pink is the middle ear, we are talking about this part, and the blue color is the inner ear. Okay. The outer ear collects the sound waves and passes them through a tube to a cavity in the middle ear. Its peculiar funnel like shape helps to collect and pass sounds in the middle ear.
तो आउटर ईयर का काम होता है वो लेना, साउंड वेव्स को कलेक्ट करना और उसके बाद उसे मिडल ईयर तक पास करना। वहाँ पर एक उसके पास एक छोटी सी पर्क्यूलर फनल होती है, फनल लाइक शेप बोल सकते हो, जो पास करती है उसे मिडल ईयर तक। There is a thin membrane in the cavity of the middle ear called the eardrum. So middle ear के वहाँ पर एक membrane है वहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं eardrum यानी कि कान के पर्दे. When a compression in a sound wave reaches the eardrum, the pressure outside it increases and it gets pushed inwards. The opposite happens when a rarefaction reaches there. The pressure outside decreases and the membrane gets pulled outwards. Thus sound waves cause vibrations of the environment. तो यहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, तो हमने पार्ट 1 में किया था, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, अगर आपको याद है तो जब कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन वेव्स, अगर वेव्स में कंप्रेशन होता है, व्हेन अ वेव कंप्रेशन इन अ साउंड वेव, जब वहाँ पर कंप्रेशन होता है साउंड वेव में, तब वो जो कान के पर्दे के पास पहुंचता है, तब तो प्रेशर जो आउटसाइड होता है वो इंक्रीज हो जाता है और वो अंदर पुश किया जाता है। लेकिन अगर वो रेयर फैक्शन है उसमें, साउंड वेव में, तो जो प्रेशर आउटसाइड होगा वो डिक्रीज होगा और मेम्ब्रेन गेट्स पुल्ड इनसाइड आउटवर्ड्स, मतलब वो जो मेम्ब्रेन है हमारी, यानी कि वो कान का पर्दा, वो बाहर की तरफ खींचा जाता है. Thus sound waves cause vibrations of the membrane. The auditory nerve connects the inner ear to the brain. The inner ear has a structure resembling the shell of a snail. It is called the cochlea. So ये जो इनर ईयर है हमारा, वो एक स्नेल के जैसा स्ट्रक्चर है उसका, तो therefore उससे हम लोग कोचलिया भी बोलते हैं. It's a different one more name for it. और उसका स्नेल की तरह एकदम स्ट्रक्चर है. The cochlea receives the vibrations coming from the membrane and converts them into electrical signals which are sent to the brain through the nerves. The brain analyzes these signals. तो कोक्लिया का क्या काम होता है, वो जो मिडल ईयर उसे पास कर देता है साउंड वेव्स, उसे कोक्लिया करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट और ब्रेन तक पास करता है. The ear is an important sensory organ. Sticks or other pointed objects should never be inserted into the ear for cleaning it. Also, one should not hear very loud music using earphones. It may cause grave injury to the eardrum. So we should always care for our ears because ears are very important sensory organs. And अगर हमें कभी भी sticks या फिर कोई भी pointed thing हमारे ear में डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल भी होगा और आपके लिए, और वो ईयर को भी बहुत नुकसान कर सकता है. और हमें कुछ ज़्यादा ही लाउड म्यूज़िक भी नहीं सुनना चाहिए ईयरफोन पहन कर. ईयरफोन्स हमेशा आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं करते, आपको ईयर्स को प्रॉब्लम ही देते हैं. अगर आप ज़्यादा देर तक ईयरफोन्स लगा के बैठोगे ना, 5-6 घंटे, तो आपके कान में दर्द भी हो जाता है. सो वी शुड अवॉइड दैट ऑल थिंग्स. सो देखिए आपके सामने है नोट्स इस चैप्टर के. क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स एंड एक्सप्लेन. आपके सामने है इसके आंसर्स. पहला है साउंड डज नॉट ट्रैवल थ्रू, आंसर है वैक्यूम. सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील इज देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, it is greater. Okay, explanation is there. Third is the incidence of dash in daily life shows that the velocity of sound is less than the velocity of light, that is lightning. That is usual, we know also this. Fourth one is to discover a sunken ship or objects deep inside the sea, dash technology is used, it is sonar. See here I have given the explanation also. So the next question is gives scientific reasons. First one is the roof of a movie theater and a conference hall is curved. Answer is in front of you. Let's go to next. Next one is the intensity of reverberation is higher in a closed and empty house. Answer is in the closed house, the sound waves cannot escape and suffer multiple reflections from the wall of the house, resulting into reverberation, as a closed and empty house does not contain any furniture.
Next one is, third one is, give reason. We cannot hear the echo produced in a classroom. The answer for it is in front of you. Next is, what is an echo? It is answer the following. What is an echo? What factors are important to get a distinct echo? Answer is, we learned about echo in our part 2 also. Here is the whole answer. Next question is, study the construction of the Gol Gumbas at Bijapur and discuss the reasons for the multiple echoes produced there. So it is very important and interesting also. The Gol Gumbas is a historical monument located at Bijapur in Karnataka. It has a smooth circular interior of a large circumference with a dome above. Due to the circular structure, sound waves generated at one spot get reflected multiple times before coming back to the same spot, resulting in the production of echoes. Here it is a figure. Next one is this. What should be the dimensions and the shape of classrooms so that no echo can be produced there? So here the answer. Where and why are sound absorbing materials used? Next is now, solve the following problems. I will explain you in another video which I will make. If you want, you can comment me in the comment section. Then I will make it. The speed of sound in air at 0 degrees Celsius is 332 meters per second. If it increases at the rate of 0.6 meter per second per degree, what will be the temperature when the velocity has increased to 344 meter per second? So answer, the solution is in front of you. Next is, Nita heard the sound of lightning after 4 seconds of seeing it. What was the distance of the lightning from her? The velocity of sound has been given in the brackets, we should remember. And it is, the solution is, we are just using the formulas that we learned in the second lecture. Next is, Sunil is standing between two walls. The wall closest to him is at a distance 660 meters. If he shouts, he hears the first echo after 4 and another uh, another 2 seconds. So what is the velocity of sound in air and what is the distance between the two walls? It's a huge answer and it is in front of you. I have just given a shown a diagram also so that it is very easy to understand for you. Next is, hydrogen gas is filled in two identical bottles A and B at the same temperature. The mass of hydrogen in the two bottles is 12 gram and 48 gram respectively. In which bottle will sound travel faster? How many times as fast as the other? Solution, it's very simple. Just we have to apply the formulas and we have to write what is given. Don't forget that to write. The calculation you should always do properly and final answer should also written. Final question is, helium gas is filled into two identical bottles A and B. The mass of the gas in the two bottles is 10 gram and 40 gram respectively. If the speed of sound is the same in both bottles, what conclusions will you draw? So the answer is simple here. This is first part and down is the second one. This is the second part of this answer. With this, we complete this lecture and also this part 3 with appropriate notes also. We complete this chapter. So thanks for watching. If you like my video, then please subscribe my channel also. Thanks for watching.